Hello. Good evening, everyone. So, before we start, let's create the energy around us. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Let's see how many of you connect with this song. चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। Hey, good evening, everyone. So, can you see me, hear me clearly? So I welcome each one of you to this beautiful episode. Every time we are exploring something different, something new, right? So let me see. Manju, hey, beautiful. Hi, Manju. Hey, how are you? Same to you. Hello. How are you? So today, I don't know, I just got up now from my seat and this song was just, ticking up here. चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल पे तराने मिले, whatever. But then I connect with every song, Manju. So can you connect with with these kind of songs? Can you see me, hear you? Absolutely. Thank you, dear. Thank you so much for showing up. That's the main important, to show up. And when we show up, we are serious about ourselves, about our self-discovery, about our self-knowing, about our healing, about our, finding my me. Lovely song. Thank you. ज़्यादा लंबा नहीं सुनाया आप लोगों को बिकॉज ये फेसबुक जो है ना वो बंद कर देता है, वो मेरा लाइव ही पूरा कैंसिल कर देगा. सो नाउ आई एम स्केयर्ड ऑफ bajawing this song for a longer time. Okay guys, so welcome to this magical evening of family empowerment and exploring the law of attraction in family life. Are you excited to see the topic today? So I do connect with Bollywood songs, yes. And Manju, if I talk about it, so not today, but in one of the sessions, I will definitely share my Bollywood story with everyone, because I think in everybody's life there is a Bollywood touch there, and that's how the Bollywood is making so real stories, right? In fact, few days back I was watching a movie, Sukhi, and if you have not seen it, please go and watch that. That's all about finding yourself and how you are exploring your inner well-being. Okay guys, so let me welcome you. So if you are new to this platform, hello to you. And if you are recurring frequent listener, viewer and watcher of my weekly lives, welcome back. And to what? To Chai Par Charcha. So get your cup of coffee or favorite beverages, whatever you feel like. And this is a kind of confession box which I always say, and you can say it's like a talk therapy as well. So because here we are sharing the actual experiences we face daily. Yes guys. So I must I must tell you guys that these sessions, whatever I'm taking, it's not for just the formality ways. It's a kind of free mini workshops, free mini workshop where you are not spending anything, and so you can make your notes and start using those tips and wisdom daily. Okay guys. Yes, hello Durgappa, nice to see you. Good. So you guys are spending your Sunday in your some wisdom and learning. I'm excited.
So thank you for joining. So I'm hoping you guys to be there till the end, because today this session is going to be just a powerful. And my daughter the day was telling me, मम्मी आप हर चीज में पावरफुल क्यों बोलते हो? मैंने कहा वो इसलिए क्योंकि अब मुझे हर चीज में पावर चाहिए। तो जब मैं बोलती जाऊंगी पावर, तो फिर पावर आ जाएगी। तो आज का एपिसोड इज ऑल अबाउट दैट कि आपको क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या फोकस करना है, क्या नहीं। सो आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस सेशन गाइज? So I'm just taking the session as if I'm taking a workshop. I'm not taking the session as if it's live ki theek hai one of the live. No, it is going to be very exciting and very learned kind of a program it's going to be. And if you are going to connect with me, keep messaging me, keep replying me, keep commenting me, then I think the energy goes to the 100% high frequency. Yes, Manju, Durgappa. So I can see 2 people are messaging right now. So guys, keep messaging, keep inspiring me also, so that I can able to inspire you guys. Okay, so before we go any further, let me introduce myself. My name is Vandana, and also known as Windy Kohli, a lifestyle designer and a healer, and also your accountable partner on your holistic well-being journey, guys. So before we go ahead and start our topic, I would like to ask you, how many of you were there last Wednesday, this last Wednesday on 29th? Hi Shagun, thanks for joining. So how many of you were there last Wednesday on 29th? Anybody, जो whosoever is there right now, क्या आप लोगों ने last Wednesday का live देखा था? अगर नहीं देखा तो आई वुड लाइक टू पीपल टू नॉट मिस दैट आफ्टर दिस लाइव व्हेन इट गेट्स ओवर. प्लीज गो बैक because the recording is there. I insist you guys to see that, because there we have spoken little deep truths of manifestation and law of attraction and a science behind it, ki how that works. But anyways, today also you are going to get lots new things. But still, you know, क्या कई बारी क्या होता है कि आप कुछ जब बात करते हो तो you never plan for all these things what you are going to talk. Last Wednesday, Manju, I did the live on this law of attraction. It was a kind of connecting to the last Sunday, because so now whatever because in last I think session I discussed with you guys that now all the sessions are going to be connect to each other. So last Wednesday I have spoken about law of attraction and manifestation. I think you might have missed it, but it's okay. You can see that it was hardly for half an hour to 35 minutes. And तो हर वक्त कोशिश ये करती हूँ, but कई बारी लंबा हो जाता है, तो I don't know. So today when I'm going to talk, I am thinking it might go little longer. तो hope कि आप लोगों की कोई appointment नहीं है, because today the episode is going to take you to the another level all together. So are you excited to learn so many tips and wisdom and new learnings today? Are you excited, guys? Great. Tell me, write it down. Let me see if anybody is replying. Okay guys, so let me just briefly tell you what was happened in the last episode. So last time we discussed about our thoughts, our beliefs, our intentions can shape not only our life but also our children's life. You know, हमारे बच्चों की जिंदगी में हमारी खुद की सोच, हमारे खुद के बिलीव्स, हमारी खुद की इंटेंशंस खाली हम लोगों को नहीं, खाली वो सही से रखती हैं, you know, they can shape our children's life also. So this was all about that the law of attraction is what? Law of attraction is a universal principle that states like attracts like, opposite attracts opposite. Getting it? So it suggests that energy you release through your thoughts, through your feelings, attracts similar energy into your life. It is all about that कि जो भी एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हो वही एनर्जी आप लोगों को वापस आती है. लेट मी सी हु इज मैसेजिंग. ओके,
यस, तो दुर्गापा, होप यू विल अंडरस्टैंड. ये थोड़ा सा प्रोग्राम मिक्स होगा हिंदी और इंग्लिश में, सो दैट द पीपल ऑल ऑफ देम कैन अंडरस्टैंड. इट्स नॉट कि खाली जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है उनकी होगी. मेरी भी बहुत इंग्लिश अच्छी नहीं है, so I'm just managing to do certain things. And what is manifestation? Anybody can reply? So till the time you reply, let me switch on my fan. Yes, so let me see if anybody is replying. What is manifestation? Yes guys, so law of attraction है कि आप कुछ कोई भी चीज आप like attracts each other, opposite attracts each other, right? So manifestation is the process guys. Law of attraction आपने कुछ visualize किया, but manifestation क्या है? वो process है जो कि आपकी desires और intentions को reality में लाएगा. कैसे लाएगा? To being into focused position. You need to have a focused thought. You need to have a right belief that you can fulfill it, so that kind of a confidence you should have it. And it is a very detailed, मतलब बहुत बड़ा है ये subject, law of attraction and manifestation. Today I am just going to give you the glimpse, but I think with my capacity I am going to give you in such a way that you can start visualizing, you can start implementing today. Are you excited to know that? Are you excited to know that guys? Yeah? So let me see who's replying. Okay guys, so before we go ahead, let me ask you a question. Anybody has literally physically tried doing law of attraction and manifestation and seeing any results? किसी ने law of attraction को use किया है और फिर आप लोगों को result मिले हैं? कितने लोगों ने किया है इसको? बताओ. Let me see how many people are replying. Okay. तो guys, आज ना मैं तुम लोगों को एक different ही एक इसका scenario बताने वाली हूँ कि now when I tell you, okay, that you are attending this session and you will realize that you are already using magical power of this law of attraction to work against you unconsciously. Don't you think it is too absurd? ये कैसे हो सकता है? हम यहाँ law of attraction सीखने आए हैं, हम यहाँ manifestation सीखने आए हैं, and this person is telling me कि you are working again, it is going to work against you. Yes, it's true guys, it's really true. So like if you are having any problem in your relationship right now, or you are suffering from money, that lot of people are facing, that there is no money with them, or they are not comfortable, they are having a lot of struggle in their family life or in their personal life, in their professional life, there is no balance which is happening. You must be having health issues, you must be having some kind of challenges which you think that, oh, it is some kind of a bad luck is going around me, and because of that, things are happening. Are you getting it guys? Because unconsciously you guys are using the law of attraction against you. You got it? Hi Minnie, hello Minnie, nice to see you. Thanks for joining dear. So are you getting guys that you guys are using the law of attraction against you? If you are not happy from inside, you still feel that there is something missing out, burnout, or you feel lonely, so there is certain things which you need to fix it up. Are you ready to fix? Are you ready to fix? See, I want your attention, at least thumbs up, at least yes, at least hand. So what happens, I will understand कि हाँ इतने लोग अच्छा मुझे देख रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, I should not feel that मैं एक Mrs. India बन के सबसे बात कर रही हूँ, right guys? So okay, so Arpita, hi Arpita, yes, hello, nice to see you Arpita. Yes, ready. Okay,
Guys, so you understood till here that I'm saying that you guys have started your law of attraction already, and it is already going against you. You know why? Because unconsciously you are using that. And now if I tell you that whatever good is happening with you, अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, आप घूमने जा रहे हो, घर पे सब कुछ ठीक है, relationships are good, everything is good, that is also because of the law of attraction. Right, guys? So how it's going to be both ways? Let's understand a little. I'll try to give you the deep truths of it, but maybe not so deeply we will go, because as I said that this is a very, very deep subject, and I have a special workshop for this, which I will tell you after this session. Okay, so now when you know this truth, that if you are putting effort consciously with your 5 senses on, and 100% focus on your intention, on your feeling, and your energy, that makes a lot of difference. So when everything is aligned with the focused thought and the belief that you can make it, you can get it, that belief if you have in you, your desires get fulfilled, guys. So it's very important to understand कि somewhere, suppose for example कि आज मैंने एक thought create की, okay, I want Mercedes. Okay, let me just take some materialistic example कि okay, I want Mercedes, or let me say okay, I wanted to buy a flat in a very good community or very good locality. I want a 4-bedroom apartment, let's say I have wished that. Now I have wished that thing, and now I am saying okay, I want the 4-bedroom apartment in such a community with such a people with such a locality, and that is my thought, is my intention is set. Now I'm saying पता नहीं यार मेरे पास होंगे उतने पैसे, am I able to do it? I don't have money, I don't have resources also to get that. कैसे होगा? रिसोर्स ही नहीं है मेरे पास, इतनी इनकम ही नहीं है जहां पे मैं वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट, वो वाला फ्लैट ले सकूं, तो ये कैसे होगा? तो आपने क्या किया? आपने सडनली क्या कर दिया? आपने सडनली अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया. आपने जो एक एनर्जी के साथ एक थॉट को सोचा, एक इंटेंशन को बनाया, साथ ही आपने विद इन सेकेंड्स यू ब्रॉट दैट अनदर एनर्जी टू क्रिएट दैट कि ओके इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो व्हेन यू आर सेइंग दैट इट इज नॉट पॉसिबल, then the universe क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इट्स लाइक अ जिनी, गाइस. आपको याद है हम बचपन में स्टोरी सुनते थे जिनी की, पर्सनल जिनी की, हम कहते थे ए जिनी, ओके यस आका बताओ क्या चाहिए आपको. याद है आप लोगों को वो स्टोरीज? So that's how the genie is there in our life. Genie is around us, genie is listening. So before I go into this genie thing deeper, let me tell you a short story. How many of you like stories? How many of you like stories? Yes, guys? Do you like stories? Just put it in the chat box whether you like stories or not. Are you enjoying it? Are you enjoying? So I should continue with it. Are you excited to know what is next? Let me see how many of you are replying. I like. Okay, thank you. Thank you, Manju. Okay, so guys, so there was a story goes like that God has created one divinity, that power, one divine power He created. It's, you can say it's a diamond, or it's a kind of genie, you can say. He's created a power, and that power He thought that the human being is not using a lot of things in the right way and the right spirit. So okay, Durgappa, thank you so much. Thank you, Minnie, for your confirmation. Thanks, dear. So then he says that the human being is using everything into the wrong way, and if suppose that power, that divinity power will come in human being's life, so what will happen? So what will happen is that he can just, use it into the another angle, rather than positive way, he will use in the negative way. So let's not give this power to the human just like that without his understanding. So then they were thinking, all of them all together sat, all the devtas and angels and everybody sat together and started
थिंकिंग कि ये पावर को कहाँ छिपाया जाए, वेयर वी शुड हाइड दिस पावर. एंड देन दे रियलाइज कि चलो किसी ने कोई सजेस्ट करता है उनको कि ठीक है लेट्स गो एंड हाइड दिस पावर इनटू द वाटर. सो देन वन ऑफ देम सेड कि नहीं नहीं, पानी में भी अंदर जाने लग गए हैं ह्यूमन बीइंग. अंदर जाके आजकल तो ये लोग सब तरह के जानवर खाते हैं, तो दे आर गोइंग एंड ईटिंग एंड दे आर हंटिंग. सो इट इज नॉट अ सेफ प्लेस टू सी, एंड दैट पावर हैज so much of energy and so much of lightning and so much of frequency that from very far you can see that power is there. Then they decided, okay, let's dig it out in the earth and put it there. Also they says ki no, now the human beings are being buried into the earth, so that is also not possible. The plants they are taking out from the earth, that is not possible. Then they were thinking अच्छा क्या करना है. And then they said चलो ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग इनको ना आसमान में, स्काई के अंदर इसको डाल देते हैं. And then they think about it and then they say no, that is also not possible. बिकॉज आजकल एरोप्लेन्स जाने लग गए हैं, रॉकेट्स जाने लग गए हैं. सो ह्यूमन बीइंग इज एवरीवेयर, वेर एवर यू सी. एंड देन सडनली द गॉड got up that universal power who's our almighty, and he says yes, I got an idea, let's keep this power inside the human being. Because human being क्या करेगा, the human being can go around everywhere but he will never sit, close his eyes and look back that power within. Guys, isn't it right? आप लोगों को गूज़बम्स आए ये स्टोरी सुन के कि नहीं? मुझे सुना के आ गए हैं, आपको सुन के आए या नहीं आए? Please share your feelings. Did you understand what I told this story? So it's like you know guys, this divinity, this power, this divine energy is within us, and we never look inside us. We look around us, we look outside. We are today looking our success outside, we are looking happiness outside, we are everything looking outside. You know, we don't sit and understand कि हाँ हमारे अंदर क्या है, where to look at thing inside us. So that's what the God did, the thing that he puts that personal genie inside you. Are you happy to know that? क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को डरा दिया कि आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेन शुरू हो गई है. अब आपको पता है आपके पास पर्सनल जिनी है और आप अपनी पावर को उसके साथ यूज कर सकते हो, राइट? सो थिंक ऑफ इट लाइक अ मैग्नेट. जैसे मैग्नेट होता है. सो इफ यू रेडिएट पॉजिटिविटी यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी. If you radiate gratitude, you radiate optimism. So all these experiences and opportunity, those things mirror these feelings of yours. Getting it, guys? So whatever you attract, you attract happiness, you will get happiness. You attract sadness, you will get sadness. You will attract insecurity, you will get insecurity. Getting it, guys? So that's the fundamental truth of the universe. This is what the law of attraction talks about, that everything is energy. So wherever I am putting energy, I am getting. Albert Einstein, in fact, कितने साल पहले उन्होंने बोला ये, उन्होंने फिजिक्स में ये समझाया हमें सबको, right? What is that formula? I'm not very good at it. I think the good people are sitting here, Mini and all that. What was that formula is? E is equal to mc square. Yes, so he has made us understood. I think that's the formula. Am I right? Guys? Anybody can reply me and tell me I should not on this platform say something wrong. I should not say wrong here, otherwise the people will think I am talking half knowledge. Okay guys, it's just a joke. And this energy, he has created that a frequency chart, which I normally talk all these things in my paid workshops. And for this law of attraction and manifestation, I have created a very beautiful workshop for 3 hours. How many of you are interested to be a part of this thing? So just put it in the chat box, me करके, तो मुझे पता चलेगा कि I am me, you are interested. So we can invite you when we are starting this. Okay, so
In fact, I was reading for someone's book, I think in Secret or somewhere I was reading that, in fact, not in Secret, it's some other book where I was reading about it कि महाभारता में अगर आप पढ़ते हो भगवत गीता में तो वहां पे कृष्णा ऑल्सो हैज स्पोकन अबाउट एनर्जी, यू नो, अ लॉट. सो लाइक वहां से एनर्जी के किस्से चल रहे हैं और अभी तक हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमने अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन से यूज करना है. Right, guys? So this is all about energy and how you are going to manifest it. That's major important. So manifest क्या है? Manifest जैसे मैंने बताया कि वो प्रोसेस है. वो प्रोसेस है कि जिस तरह से आप अपनी डिजायर्स, अपने ड्रीम्स को अगर आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको अपनी थॉट पे, आपकी इमोशन पे, आपके बिलीफ में जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको बिलीफ नहीं है, जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो वो आप पूरा करोगे, तब तक मैनिफेस्टेशन डजंट वर्क. इट्स नॉट यू नो गाइज जस्ट विशिंग समथिंग. अब आज मैं विश कर लूं कि ओके मेरी आंखें बंद है, अभी मैं उठ के मैं जैसे ही अभी आंखें खोलूंगी मेरा ग्लास वहां प्रॉपरली किचन में चला जाए, मेरी सफाई हो जाए. ऐसे तो नहीं हो सकता ना जब तक मैं उसके ऊपर कोई प्लान क्रिएट नहीं करती. राइट? So the planning needs to be created on that, isn't it, guys? So it's actively about visualizing and working towards what we want with the belief that it is achievable. Getting it, guys? Hello, let me see if anybody is replying here. Anyone is replying? Let me see. Getting it, guys? So I will repeat my words here that when we are actively, in fact, please keep your notebook and a pen with you because you are going to learn lots of new things, lots of small tips which can help you in your daily life, and I would like to know from each one of you that you are using it, right? So let me repeat this, that when you are actively visualizing and working towards what you want with the belief that it is achievable, then only, guys, you will see that it is going to be achieved. You will get the desired results, and that's how your law of attraction manifests. Got it? Got it, guys? Getting it or not? ऊपर से जा रहा है या समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है आप लोगों के या समझ में आ रहा है? लेट मी सी कितने लोग जवाब देते हैं. Yes, Minnie, Durgappa, Arpita, Manju, these people I can see on my front window. So who other people are replying? So I am unable to see that. Okay. So tell me, guys, are you understanding what I am saying? So how do we connect now these emotions, these feelings, these concepts, whatever we are talking about, उसको हम फैमिली लाइफ में कैसे ला सकते हैं? आप मेरे से ये क्वेश्चन पुट कर सकते हो यार. फैमिली में हार्मनी हम लोग इकट्ठे कैसे इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं? सो इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिव इंटेंशन. It's all about, you can say, synergy, which you are bringing collectively together as a family. So when we as a family unite our thoughts, our energies and our action towards a common goal, तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? एक कॉमन गोल. अगर मेरा वो कॉमन गोल सेट है एज अ फैमिली, then we should all sit together, create the thoughts towards that goal, creates the energy towards that goal, and then create the action towards that goal. So that is how we increase our ability to manifest. Got it, guys? Is it simple? Is it simple? Is it possible or it's not possible? Tell me. Is it possible or it is not possible? Let me know. So if you want harmony, create that. If you want peace, create that. Can you create that? So whether it is achieving harmony at home, you know, receiving like the proper connection from the other people, or reaching from your collective goals, or creating a nurturing environment for growth, you can shape your family's reality. Yes, guys? So it's very important that as a family
what I am doing it together. What is possible? See, I tell you my own example. So I didn't know that it is a law of attraction or manifestation. I had not gone into that kind of a science, but yes, in spirituality, I was learning a lot of things, and unknowingly, I was like, as I said, unconsciously, we are doing a lot of things. Even good things unconsciously we attract. Even bad things unconsciously we attract. Even bad things consciously we attract. Even bad things, consciously we attract, and even good things consciously we attract. You understood what I said? मुझे ही नहीं पता चल रहा मैंने क्या बोल दिया. Right? So basically, both ways we attract, law of attraction, attract both the things. So when I understood this, I realized ki in those days when I was like literally into meditation for 2 to 3 hours, I used to sit. I used to go to my retreats for like after every 2 months, 3 months, and definitely I was learning something, implementing in my house. Then I started realizing that there is a lot of changes are happening in my family. There are certain things which I was not happy with the kids, or kids were not happy with me. Then unknowingly, like literally unknowingly, I started mending that. तो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या करना शुरू कर दिया कि जैसे कि मुझे कुछ इशू हो रहा है किसी भी बच्चे के साथ, तो मैंने अपनी सोच को डिफरेंट किया. आई चेंज माई थॉट प्रोसेस कि ओके, लेट मी गो टू हर शूज एंड लेट मी अंडरस्टैंड हाउ शी इज थिंकिंग, and that's how I started putting effort to know all my daughters. And guys, one more very interesting thing I wanted to tell you, you can implement if you can in your families. Like when my kids were little growing up stage, and I became from a homemaker to a entrepreneur, so a lot of changes has come, and I used to feel that somewhere I'm not attending them 100%, but I tried my best to attend them all possible ways with them. So what I used to do when we all used to sit or talk, और कोई guest आया है या आपस में बात कर रहे हैं, if suppose one of my daughters says something which was not right ethics or right value, that particular sentence or things used to give me, I never used to tell them कि गलत बोल रहे हो, या तुमने ये गलत किया है, या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, या तुमने ये क्यों नहीं किया. I never ever. बस मैं क्या करती थी, मैं अपने माइंड में वो बात को ना रख लेती थी और जाते ही मैं लिखती थी, बिकॉज आई नो वन थिंग वेरी वेरी स्ट्रांगली, दैट माइंड डजंट रिमेंबर सो मेनी थिंग्स. So if you want to achieve something, it's very important for you to write, to keep that diary, to keep that separate thing for you, where you can put those things into the parking lot, and then that what needs to be mend or heal or whatever. So then what I used to do, I used to call them, literally as a romantic message I used to send them. There was a group of us, and I mentioned that particular person, for example Shagun or Akanksha or Kitu. So I say ki, okay Shagun, I would like to take you for a coffee date, would you like to come? Separate, this message was separate to her, and she used to think initially, जब उन्हें नहीं समझ में आया कि ये मम्मी कर क्या रही है, then they used to think, oh मम्मी ने कॉफी के लिए बुलाया, and they always used to say yes and very excited कि okay मम्मी has called for a coffee date. एंड मैं उनको बहुत अच्छी जगह पे लेके जाती थी कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी पिलानी, सब कुछ करना, कॉफ़ी पिलाते हुए उनकी लाइफ के बारे में पूछना, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ओके व्हाट इज इट, व्हाट इज दैट, एंड देन दे आर excitedly telling me, and then I tell my point of view, okay, this is what I noticed, but not to tell them as a complaint, but in a very very jovial way, in a very connected way, in a very synergy way, that synergical energy I used to bring, because I was learning a lot, and as a Reiki healer, as a Reiki master, I know how the energy works. So that is also one plus point which I started. I actually the good thing happened is that the wonderful thing happened is कि पहले हर चीज मेरे लिए ना एक कंटेंट था, ओके कि आपने कुछ पढ़ा है, बट जब वो पढ़ाई मैंने डे टू डे में यूज करनी शुरू की, वो एनर्जीज में डे टू डे में अप्लाई करने लग गई, तो वो मेरे लिए एक पावर बननी शुरू हो गई. That is how it happens. Today maybe you are thinking, oh, it is a lesson or it is something learning, but that learning, when you start implementing in your day-to-day life, that's how, guys, you will get the results. You will not get the result just like that. You will get the result when you start
putting those knowledge, those tips, those tools, those wisdom into your daily life. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड चेंजिंग. एंड उसके बाद क्या होता था कि 15 मिनट मीटिंग खत्म होने से पहले मैं सबको इनवाइट कर लेती थी उसी कॉफी शॉप में. एंड देन वी हैड अ फैमिली टाइम एंड ऑल दैट. सो मैंने एक चीज जो लर्न की वेरी इनिशियली इन माई लाइफ इज that in my office I made it a point that I have to have a meeting with my employees. The same way I always have a meeting with my children, you know, always. So once in 15 days we all used to sit together, talk about what is not right, what is not you know, what we need to change. घर का अगर वो it can be related to house or it can be related to their life or my life or any future plannings or decisions. You know, this is a very long things which I can explain you in the framework that how can you do it once when you are coming in my community 100% and when we are starting our group sessions together. Okay guys, so is it interesting? Are you getting bored or are you finding it interesting? Yeah, let me ask your opinions guys. कौन क्या बोल रहा है? लेट मी सी इफ यू गाइज आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग. सो दिस इज व्हाट हाउ द एनर्जी वर्क्स. सो लेट्स नाउ बिफोर वी डाइव इनटू द प्रैक्टिकल इजी टू इम्प्लीमेंट टिप्स. तो कितने लोगों को आज टिप्स चाहिए इसके ऊपर टू एम्पावर यू एंड योर फैमिली harmony? You know how you need to bring that harmony in your family. Do you want some of the tips to be shared with you? Shall I share the tips with you? Yes. So Manju, so I'm just asking you guys one question before I jump into the tips, you know. Any questions till here or any sharing till here where you feel that is it interesting? Okay, thank you. So any questions here guys where you are thinking ki okay, you have some kind of a doubt or some kind of a thing ki which you feel that how to do that? Yes, do share. I will share, but I'm just asking you that are you clear till here? Do you have any questions? Yes or no? Or any sharing? Anybody wanted to share anything? Minnie, you want to share anything? Durgappa, आपको कुछ शेयर करना है? Arpita, if you are there, do you want to share something? I find manifestation difficult. Okay. Anybody else also find manifestation difficult? Guys, see, manifestation इसलिए difficult लगती है क्योंकि कोई भी चीज जब हम जो भी कभी प्रोसेस होता है ना वो डिफिकल्ट लगता है. मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. आई विल नॉट गो वेरी डीपली इनटू इट बिकॉज एज मैंने बताया कि बहुत ही लंबा चैप्टर है. मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज अगर आज आपने सोचा कि मैंने आज अपना वेट कम करना है, मुझे आज 5 किलो वेट कम करना है, इस मंथ में मैंने एफर्ट मारना है. आज आपने सोच क्रिएट की, थॉट क्रिएट की कि मुझे वेट कम करना है. अब वेट कम करना है ये थॉट आ गई और आप अपने आप को शायद विजुलाइज भी करने लग गए कि ओके मैं जब 5 किलो वजन कम कर लूंगी कैसी मैं दिखूंगी, मैं कैसी दिखती हूँ. तो आपने वो भी क्रिएट कर लिया. अब आपने वो भी क्रिएट कर लिया, आपने ये भी क्रिएट कर लिया, आपने थॉट भी क्रिएट कर ली कि मुझे करना है. अब इसको हमने मैनिफेस्टेशन में बनाना है. ठीक है, अब मुझे अपनी एनर्जी इस पे डालनी है कि ओके फाइन. एनर्जी कैसे डालनी है? एनर्जी इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग द गोल्स फॉर दैट ड्रीम, फॉर दैट थॉट. तो अब मुझे इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा. एटलीस्ट मैं सुबह उठूंगी, मैं अपनी वॉक पे जाऊंगी, आधा घंटा की वॉक करूंगी, फिर मैं अपने जिम जाके या जिमिंग करूंगी या मैं अपने योगा के कुछ आसनास करूंगी. फिर ये करने के लिए कि मुझे आसपास की चीजें मेरे को ज्यादा डिस्टर्ब ना करें, तो मेरा माइंड काम होना चाहिए सो दैट कि माय माइंड कैन विजुअलाइज माई सेल्फ क्लियरली. कि अगर मेरा माइंड पे यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे क्रम्पल्स हैं, टू मेनी थिंग्स आर देयर, टू मेनी हेजी थिंग्स आर देयर, टू मच क्लाउड्स आर कमिंग विद इन माई माइंड. So how can I see myself so clearly beautiful, you know, in the mirror or in the reality? So what? तो then मैं थोड़ी देर के लिए मुझे मेडिटेट भी करना पड़ेगा. मुझे थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ के अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. This is a process.
Getting it? So am I doing that process correctly? So once when I do that process, अगर अभी मुझे गाड़ी लेनी है, चलो लेट्स टेक इट लिटिल मटेरियलिस्टिक ड्रीम, गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी लेने के लिए पहले तो मुझे विजुअलाइज करना है, जो मैं अभी टिप्स में, ये आप ऑलरेडी मैं टिप्स शेयर करना शुरू हो गई हूँ आपसे, कि आपने पहले तो अपने आप को, दिस इज द फर्स्ट टिप यू नीड टू ब्रिंग इन, यू नो, कि क्विक टिप ये है कि आप अपनी विजन सेटिंग करो, कि पहले तो आप अपने आप को उस गोल में देखो कि आप दिखते कैसे हो. You know, how are you looking like yourself driving in that white color Mercedes? आप कैसे दिख रहे हो, आपको लोग क्या कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आप क्या सुन रहे हो, आपको क्या सुनाई दे रहा है, आपने उस टाइम पे क्या कपड़े पहने हैं. सो पहले तो वो अपनी एक इमेज को क्रिएट करो. दैट मैनिफेस्टेशन यू ब्रिंग इट क्लियरली विद इन योर माइंड, राइट. तो उसको पहले तो मतलब आप क्रिएट करो, एंड देन अब उसके बाद आप उसके ऊपर प्रोसेस बनाओ. प्रोसेस कैसे? कि अब गाड़ी लेने के लिए मुझे करना क्या चाहिए. डेफिनेटली यू नीड मनी. यू नीड मनी और नॉट? यू नीड मनी, यस और नो? गाइज, यू नीड मनी. तो मनी कैसे आती है? मनी इज अगेन अ एनर्जी. आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट कि मनी इज अगेन अ एनर्जी. राइट नाउ व्हाट इज माई सिचुएशन? Am I saving something from my salary, whatever I am taking, whether I am taking interest or salary, or I am a businessman or getting any kind of a consultancy? Am I saving something for myself? I try, but I am not able to visualize properly. That's what. So the first step is that I will tell you. I will give you a proper tip that how you can write it out. So तो जो मुझे हर मंथ, अब मैंने अगर सोच ही लिया तो मुझे हर मंथ उसके ऊपर थोड़ा सा पैसा अलग रखना पड़ेगा, सो दैट कि आई शुड बी एबल टू गेट माई ड्रीम कार. नाउ टाइम लिमिट, यस इट हैज टू बी अचीवेबल. अचीवेबल भी तभी होगा, मैं सोचूं कि आज मैं कमा रही हूँ 50,000 रुपये महीना, और मैं सोचूं कि मेरे को अगले साल तक गाड़ी लेनी है, तो इट लुक्स लिटिल डिफिकल्ट कि आप 50 लाख की गाड़ी या 60 लाख की गाड़ी आप नहीं ले सकते 6 महीने के अंदर. तो इट हैज टू बी क्वाइट रियलिस्टिक ऑल्सो. तो रियलिस्टिक बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा. दिस इज वॉट आई टीच इन माई पेड वर्कशॉप, which is a big, that is why I said it is a 3 hours workshop, where I will take you step by step how you can achieve your dream. Are you ready to do that? Are you ready to learn that, guys? How many of you are ready to do that? Manju, would you like to do that? So that is a 3 hours workshop, and just put it in the chat box that I am ready. So once when you are ready, my team will see to it, and then we will invite you for that with the free ebook. और अभी मैं नीचे भी मैसेज में आप लोगों को, yes, goals should be realistic, yes, absolutely. So मैं आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक भी भेज रही हूँ. I wanted you to fill it up, and उसमें मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है कि how many of you are interested to join this law of attraction workshop. So if you are saying yes, thank you, Manju. So then I will send you the invite. My person will personally call, my team will personally call you, and then we will, before that I will send you the ebook, so you will have the basic knowledge of that. And when we are sitting in the workshop, we are only practically doing things. Are you getting, are you finding it interesting? Is it interesting? Tell me. And there is a very small cost which you will not mind paying. Ready? Thank you, Minnie. Thank you, Manju. Because they say that if you pay, you are serious about it. When you are serious about it, you are ready to take action. And when you are ready to take action, you will see the result. Yes, guys? Is it right? Am I right? So everything is energy as I am saying this. Now is the time. Please take out your notebook and the pen and write your first tip. First tip is vision setting. So when we say vision setting, so create a family vision board. You know, मैं unknowingly ये सब कर रही थी. You know, आज मैं आपको knowingly ये सब चीजें practically बता रही हूँ, जो मैं unknowingly already we were doing, all 4 of us in the family. And today I will not boost it, but guys, we all 4 of us has a lot of, you know, synergy between us. So a lot of positive energy between us. You know, there is no rifts. I think slowly we were all able to, we all have put effort to remove those rifts from you know, us, and today we are just like friends and staying together.
So thank you for listening it, because this is a very powerful story, and definitely you will get, when you are into my community, you will get lots of new things to come up. Okay, so create a family vision board, and वहां पे सब लोग इकट्ठे, each member, आपको सपोज अगर आपको पीस चाहिए तो पीस रिलेटेड आप अपनी सब वो पिक्चर्स इकट्ठी करो. पहले तो विजन बोर्ड बनाना जो दिखे आपको, पहले पिक्चर्स क्रिएट करो. उसके ऊपर कोई कोट्स लिखे हैं जो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हो, ब्रिंग दैट कोट्स, कॉपी दैट कोट्स एंड पुट इट दैट, वो प्रिंट आउट वहां पे डालो. देन उसके बाद ब्रिंग सम ड्रॉइंग्स ऑफ योर ड्रीम्स. अब वो ड्रीम, आप गाड़ी में बैठे हो, आप कोई घर का ड्रीम है, आपका कोई वेट लॉस करने का ड्रीम है, तो वो सब चीजें आप जो है वो उसके अंदर, आप वो विजन बोर्ड के अंदर अपना डालना शुरू कर दो. नाउ स्टिक दीज पिक्चर्स ऑन द बोर्ड एंड अपनी एक घर के ऐसे कॉर्नर पे रखो जहां पे वो दिखे आपको. वो बेशक आप किसी दीवार पे लगा दो, जहां पे जब कभी कोई आइडिया आया, एक प्रिंट आउट उठाया, या कहीं न्यूज़पेपर में से कोई चीज ऐसी दिखी, या कोई मैगजीन में से कोई चीज ऐसी दिखी, आई यूज्ड टू डू दिस एंड आई नेवर न्यू इट इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो चीजें काट के उसको पेस्ट करते जाओ, एंड देन यू विल सी what beautiful thing is happening, right guys? And this board becomes your visual representation of your family's shared dreams, your reminders, where you are reminding each other and you are motivating everyone ki let's all of us together create this dream successful. Yes guys, is it interesting, this first tip? Is this interesting? Tell me. Are you getting bored? Tell me guys, is it interesting? Are you writing it? Okay, now quick tip number 2, which is positive affirmations. Thank you Minnie. Okay, the second one is the positive affirmations. That's really important. So start each day with the family affirmation circle. कि सारी फैमिलीज, इकट्ठे मेंबर्स जो हैं वो स्टैंड इन अ सर्कल, स्टार्ट डूइंग इट. आई नो योर फैमिली विल से व्हाट वियर्ड इफ टुडे यू आर स्टार्टिंग, तो यू विल से फैमिली ये क्या पागलपन है, हमें सर्कल में क्यों इकट्ठा कर रहे हो. जस्ट रिक्वेस्ट देम कि फिर मेरे लिए कर दो यार, सिर्फ मेरे लिए एक बार कर दो, कुछ नहीं होता, कुछ मत करना, मैं ही बोलूंगी, आप खड़े हो जाओ मेरे साथ सर्कल में. मुझे पता है कि बहुत सारी फैमिलीज ये आपको आपका मजाक उड़ाएंगी, आपको थोड़ा उसमें लेके जाएंगी कि व्हाट नॉनसेंस शी इज डूइंग, बट लेट इट बी, डजंट मैटर. इफ यू हैव बिलीफ देन इट विल हैपन. इफ यू डू नॉट हैव बिलीफ और यू हैव समवेयर कॉन्शियसनेस, देन डेफिनेटली थिंग्स विल नॉट वर्क आउट. So stand in a circle, hold hands and have each person say one positive affirmations about themselves or the family. Let's say for example you are saying, I'm kind, I'm loving, I'm a loving person, I'm happy person, we are a strong family all together. You can create those affirmations for yourself, whatever you want. Create some 3 to 4 affirmations. I am not saying कि आप 21 affirmation 50 affirmation बोलो, नहीं. 2 or 3 affirmation which you connect a lot. If you want love in the family, create the affirmation, those mantras. I always talk of, I do not use the word affirmation so often. I always say it is the mantra. So create that mantra for yourself. What you want peace? Create your mantra around the peace. Just 2 or 3 sentences that I am so peaceful. My family is so peaceful. Each member of the family is so peaceful around me. Even I am getting the people in my house is peaceful. Getting it? So whatever the intention you have, just create your mantra around it. Powerful! Guys, is it powerful? This mind my words. 21 दिन करो ये सब जो मैं बोल रही हूँ. अब 21 दिन के बाद मुझे बताइएगा कि आपके घर के अंदर कितनी पॉजिटिविटी आ गई है और कैसे आपका फैमिली बॉन्ड स्ट्रेंथन हो गया है. जस्ट वॉच इट एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज एक्सट्रीमली नहीं,
5 मिनट, बस 2 मिनट रुक जाओ. It's extremely powerful. So this is the time for my dog's food, and when the food comes, they are just crazily barking. So that is why I'm telling her to stop. Okay, so now the third one is, are you writing it? Are you guys writing? Yes or no? And also the people who are not live and they will watch the recording, please do reply wherever I am asking your attention. Please do that and give it to me, because it's very important that we should connect, because your messages inspire me. And if suppose I am inspiring you in any, like 1%, 2%, your messages also 100% inspire me. Your one sentence makes a lot of difference to me also, that I am delivering the right content for you guys. Okay, thank you. Now the third one is the gratitude practice. Yes, writing. Thank you, Manju. So the third one, Manju, is very important, is the gratitude practice. So that is also, if you have not started as a family. In fact, some of the families are not together. The daughters are somewhere, sons are somewhere. It's okay. You can in fact tell them, educate them, and tell them they should also do it, with their families, and together then you bring it on the vision board. You can do that. So that gratitude practice is all about कीप अ फैमिली ग्रैटिट्यूड जार. ये एक चीज़ जो मैंने सीखी ना, वो मुझे बहुत ही पावरफुल लगी. और इनफैक्ट मैं आज ही सोच रही थी कि शायद मैंने ये शेयर ही नहीं की अपनी फैमिली में अच्छे से. शायद मैंने विद वन ऑफ द डॉटर माइट हैव आई शेयर. सो आई वाज थिंकिंग, नो, वी ऑल have a family time in the evening, so I'm going to share this and we are going to do from today itself. So keep a family gratitude jar, guys. ये बहुत पावरफुल है. So place a jar in a common area with paper and a pen. उसके पास ना छोटे छोटे पेपर्स रख दो. आजकल तो इतने सुंदर से वो पेपर्स मिलते हैं, स्मॉल, राइट. Every day encourage each family member to write down one thing they are grateful for. कोई एक चीज, कि कुछ भी, like कुछ भी वो हो सकता है कि ओके आई एम ग्रेटफुल फॉर, ओके आई एम अवेक टुडे, और आई गॉट अप अर्ली टुडे, और आई एम ग्रेटफुल दैट माई पेन, मे बी उनको कोई पेन हो रही होगी, या आई डू नॉट हैव एनी पेन इन माई बॉडी, और आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस सन rises in the morning, the sun is giving me the day, my day started with full energy. I'm grateful for the cup of tea. In fact, कि मुझे किसी ने आज चाय का कप दिया है, मुझे उठ के नहीं जाना पड़ा, मुझे मिल गया. You should be grateful for all these small things, so कोई भी चीज जो आप ग्रेटफुल हो, अपनी फैमिली मेंबर्स को बोलो, एक एक चीज लिखो और जार में डालते जाओ. और एंड ऑफ द वीक, व्हाट्स द फैमिली ग्रेटिट्यूड जार? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मंजू, की एक आप जार ले लो. जार, ओके, लेट मी पिक अप. कोई भी जार, एक कोई बड़ा सा बर्तन ले लो, कोई बर्तन, कोई जैसे गोल सा कोई बर्तन है, कोई ले लो, कुछ ले लो. आपके घर में पतीले हैं, बर्तन है इतने, कोई आपके पास कोई बिस्किट्स के डब्बे, हमारे पास इतनी सारी चीजें होती हैं. टेक दैट वन डब्बा, वन जार, वन बॉक्स, एंड उस बॉक्स में हर रोज के रोज एक ग्रेटिट्यूड की स्लिप डालते जाओ. वो कुछ भी हो सकता है. आज मैं डिनर पे गई, आई एम सो ग्रेटफुल. आज मेरी एनिवर्सरी थी, मुझे किसी ऐसे बंदे ने विश किया जिससे मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती थी, आई एम सो ग्रेटफुल. सो देयर आर ग्रेटफुल के लिए बहुत सारी चीजें हो जाएंगी आपके पास. जस्ट पुट इट इन दैट जार, एंड देन एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ रीड दोज gratitude notes, together. And it is such a great way of appreciate the small joys and stay connected. Getting it? Is it powerful? Thank you, Minnie. Thank you. So it is so powerful. मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको इसमें से क्या मिलेगा. Next, and in fact, I am going to start this in my office also. This is what I thought. From tomorrow, I'm going to do that. I know कि बहुत सारे मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी हर चीज पे थोड़ा बोलते हैं कि ओ माय गॉड, इसका फाइंड माय मी स्टार्ट हो गया. बट आई थिंक द फाइंड माय मी इज द पावरफुल थिंग आई कैन फाइंड नाउ. Okay, guys, so the last tip is are you enjoying it? Are you finding it powerful? Again, the word powerful. In fact, one of my marketing person also told me, madam, आप ना powerful word बहुत use करते हो. And then Shagun told me one day, my youngest daughter, mummy, in everything you use powerful. Then I realized कि नहीं यार, क्योंकि मुझे power बनना है अंदर से, इसलिए मैं ये powerful use करती हूँ. तो कितने लोग आप हो जो आप चाहते हो पावरफुल बनना? तो जो भी आप बनना चाहते हो
उस वर्ड को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो. Okay, so the fourth tip is visualizing success. That's really important. अगर मैं अपनी सक्सेस को विजुलाइज ही नहीं करती, मैं देख ही नहीं पा रही हूँ यहाँ पे, तो फिर मैं उसको पूरा भी नहीं कर पाऊंगी. Yes, it sounds powerful. Thank you. So practice family visualization. To spend few minutes each day, maybe after dinner or before bedtime, जहां पे कि सारी फैमिली आपकी इकट्ठी बैठी हुई है एंड क्वाइटली यू गाइज आर सिटिंग एंड इमेजिनिंग अचीविंग द कॉमन गोल. तो पहले तो एक कॉमन गोल क्रिएट करो कि ओके हम दोनों का गोल क्या है. ओके मेरा गोल है, मैंने यहाँ जाना है, पर मेरे पार्टनर का सेम गोल है या नहीं है. तो अपने पार्टनर को साथ बिठाओ और उससे पूछो भैया तुम्हारा गोल क्या है. मे बी माई पार्टनर वॉन्टेड दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी. ओके, अब वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज वेरी वास्ट. कितनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कितनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, कितनी चाहिए, कब तक चाहिए, पहले तो वो क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि कितनी चाहिए. मुझे 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, कितनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए. मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, कैश चाहिए या एफडी चाहिए. So there is a lot of things which that's why I told you that this workshop has a lot of things which will give you the clarity. Alright guys, तो वहां पे एक आप उनके साथ बैठ के एक collective goal create करो. And then it could be as simple as you can picture yourself as a peaceful family. ऐसा गोल होना चाहिए, simple goal but very very clear goal. कि ओके कि हम लोग एज अ पीसफुल फैमिली की रोज अगर हमारे साथ झगड़े हो रहे हैं या आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, मुझे उनकी बात पसंद नहीं आ रही, उनको मेरी बात पसंद नहीं आ रही, तो कहाँ पे आई विल क्रिएट दैट सिनर्जी जहां पे वी ऑल आर टुगेदर विद ईच अदर एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट वी आर लिसनिंग ईच अदर एंड रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स गोल्स एंड ईच अदर्स like whatever you wanted to say, we are connecting with each other, right guys? So you first of all create that goal, and this collective visualization can help turn these dreams into reality only when you are clear about that goal. तो पहले तो उस गोल को देखो कि वो गोल क्या है और उसको सक्सेसफुल होते देखो. अब वो क्या होगा, कैसे होगा, उसको रियलिस्टिक कैसे बनाएंगे, उसको अचीवेबल कैसे बनाएंगे, उस गोल को स्मार्ट गोल कैसे बनाया जा सकता है, उसको स्पेसिफिक कैसे बनाएंगे, वो हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं, वो क्या टाइम बाउंड होगा या नहीं होगा, वो हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे. पहले वो देखना जरूरी है, पहले वो अपनी विजुअलाइजेशन में लाना जरूरी है. पावरफुल गाइस, टेल मी. 1 घंटे का मैंने बोला था, आज मुझे लग रहा था कि मेरा सेशन आज 1 घंटे के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि आज मैं वर्कशॉप ले रही हूँ. ये फ्री सेशन जो है ये वर्कशॉप है. दिस इज नॉट अ फेसबुक लाइव, जस्ट अ काइंड ऑफ सेशन. दिस इज अ वर्कशॉप विच वी आर डूइंग टुगेदर एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग इट, राइट? सो रिमेंबर बच्चों की जो यूनिवर्स है ना, दैट listens to you every time. So whatever you are putting there, you are getting it. So now let's start putting out positivity. Let's start putting out clarity. Let's start putting out the right intention. And then usko kaise humne fulfill karna hai, that is ready to learn more deeply in my live session of 3 hours law of attraction and manifestation. And we'll again deep dive into that particular subject and understand. जहाँ पे खूब सारे आपके हो सकता है क्वेश्चंस हो, जहाँ पे हम लोग जूम में करेंगे ये वाला प्रोग्राम, और जूम पे आप लोग अपने क्वेश्चंस भी शेयर कर सकते हो, अपनी चीजें शेयर कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग उसको मैनिफेस्ट होते हुए एक्चुअली उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे लाइव. फाइंड इट इंटरेस्टिंग गाइज. तो अभी आपको ये एक गूगल फॉर्म जो मैं भेजूंगी उसको इमीडिएटली फिल करना है, भेजना है. जितनी जल्दी मेरे पास वो आ जाएगा उतनी जल्दी मैं ये सेशन शुरू कर दूंगी, और वो ऑनलाइन ही रहेगा लेकिन लाइव रहेगा. इट्स नॉट अ रिकॉर्डिंग और एनीथिंग, इट्स जस्ट द कनेक्टिंग बिटवीन ऑल ऑफ अस टुगेदर, राइट गाइज? Interesting. How do you like the session today? And also you will get the ebook also with that.
तो मैं पहले आप लोगों को उस ई बुक को मैं पहले ही भेज दूंगी मेल के थ्रू, सो दैट कि आप लोग उसको पहले तो बेसिक्स आपको समझ में आ जाए, एंड देन यू विल इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगी कि पहले आप ये होमवर्क करके आओ उस सेशन में, सो दैट कि हम लोग बस अब इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात करें और फिर अगले 40 दिन इसको होता हुआ देखें। कितने लोगों, माय गॉड, मुझे गूज बम्प शुरू हो गए हैं बोलने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास भी इतनी सारी चीजें हैं, तो आई थिंक आई विल ऑल्सो प्लान विद यू गाइज एंड वी विल मेक इट, यू नो, वी विल सी इट happening. Yes, guys? Oh, thank you, Mimi, for your good smiley and hearts and all that. Good, guys. So, did you enjoy the session, guys? Just put it, yes, enjoyed. Was it powerful? Was it informative? Do you feel that it is possible? Okay, do you feel that it is possible? Just write possible if you feel that it is possible. Just put it in the chat box. I will share it with you, lots of stories like that जहाँ पे सच में लगेगा कि oh my god, everything is possible. It's all about energy, and I will go deeply into the science of it. Yes, put it in the chat box quickly guys. Yes. Okay. Thank you. So hope you guys have enjoyed this session. Please, if you feel that this is powerful, I request each one of you to like and share it. Share it with your friends. Share it on your अपने उस पे अपने प्रोफाइल पे आप इसको शेयर कीजिए, so that it should reach to the maximum people who actually needs these kind of life to be created, and they are still stuck, you know, they are still stuck to be happy. And happiness is, as I said, it is the divinity which is inside us. We just need to know how. I'm going to go inwards and see the magic. Yes, guys? Okay. Okay. Yes, guys? Yeah? थैंक यू सो मच। आपको पता है पूरा 1 घंटे का सेशन लिया है मैंने, 2 मिनट भी ऊपर हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच टू बी विद मी एंड गिविंग मी एनर्जी टू, so that I can speak this, I can, you know, take this session with so much of energy, right? So everything is energy. So thank you so much. Take care. Love you. And I want your so much of comments and so much of sharing. So I wanted you to make this happen today, right? Take care. Bye. Love you so much.